Okay, we are now live. Just a minute, let me check if everyone can hear us. Okay. Just a minute. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. Thank you for joining in today for this session about uh, understanding about MBBS, the field, the challenges, and how how to make a proper decision whether or whether not to opt as to being a doctor. So before we start, on behalf of the entire ThinkViser team, I would like to thank Dr. Osama and Dr. Khizr for taking their time out and joining us today. Thank you very much for being here today. I would also like to thank all the viewers who have joined in and tuned in to watch this session. We hope it will be a beneficial session which will help you in determining a good career choice for you. So, to begin with, we would first want to know more about the both of you. How your MBBS journey started, and right from your, you could say, childhood to what you are today, a successful doctors. If you could just share a gist about how your MBBS or how your journey as a doctor was. I mean, we could start with Dr. Khizr. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah, I am Dr. Khizr Hussain Junedi. Thank you so much for inviting me to this program. MBBS actually till 10th, I was interested more into mathematics, and I was a student from CBSE. I would spend more time with physics, chemistry, and maths. And when the results were out, in fact, that was reflected in my CBSE final exam as well, where I got 100 out of 100 in maths, and science, it was barely 89. However, my father, because of some, and I wanted to be an aeronautical engineer, but my father, he had different plans, and his friends advised him that this is a brilliant child, and maybe you could consider MBBS for him. He's definitely going to nail the MSET examination that used to happen back then in the combined state of Andhra Pradesh. And then my father dumped me into hostel. The first few days were really difficult, and then we got acclimatized to staying there, because all of us had the shared the same agenda, the same feelings, and had the same goal to crack MSET eventually. And like-minded people came together. After a few months, we were shifted into the same room, and ultimately 2 years they flew in a jiffy, and MSET we qualified luckily and got into a government medical college in Hyderabad, Gandhi Medical College. I got 545 rank in the state. Then MBBS, MBBS was difficult,
The first year was especially horrible because there was a transition from a spoon-fed Sri Chaitanya Junior College to a completely different government setup, where you have to rely more on self-study and guidance from seniors rather than your faculty. So anyways, MBBS was also over. There were ups and downs, and after MBBS I appeared for my NEET PG, and then got into MD pharmacology from the same college. And I completed the MD pharmacology, and I have my own clinic in Hyderabad Vijayanagar colony, where I happen to cater to over 70 to 80 patients a day. So that's great. That's great. thank you. You could say truly inspiring, and I hope it was run through all of your memories right from from your childhood when you said all of this. Yeah. That's great knowing Dr. Khizr. Dr. Usama, could you also share a brief about your journey with us? Yeah, sure. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum assalam. Firstly, thank ThinkViser team, ThinkViser for giving us this opportunity, especially Kamran and Hamad. They're doing a wonderful job. I am basically from Khammam. My schooling happened in Warangal as well as in Khammam. So I was like shuffling from Khammam to Warangal, and then I was basically not meant to be a doctor. I didn't want to become a doctor. I was like below average student when I was in school. I was not very nerdy and very studious per se. What happened was my mother, she tried to make my elder sister a doctor, but somehow she couldn't crack into it. So what happened is I was a scapegoat. As my sister couldn't do, they made me a doctor. So despite being in Khammam, I was put into hostel during my 10th days, and only it was only in intermediate because I went to a local college in intermediate. So only in intermediate I came to know that I can do well. I was a college topper. I was awarded Pratibha. I mean, there was an award for top 10 rankers of a district. So I got Pratibha award then, from the local college only. Then I have taken 1 year long term from Sri Chaitanya College in Vijayawada. Then I got a rank of around 1200 plus. I was getting into Deccan and then Shadan. Somehow it happened that I took Shadan. Then I did my MBBS 5 years from Shadan. And believe me, 5 years in Shadan was like a cakewalk. We enjoyed it a lot to the core. Like what we used to hear is like MBBS के बच्चे बहुत मेहनत करना है, खूब पढ़ना है, MBBS करना कोई आसान काम थोड़ी है. So despite that, I mean, we were having very difficult time writing exams and all that. That was there, but overall it was very, I mean, smooth. What people think outside is MBBS means it's a very difficult and tough job. It wasn't like that for us. After getting into MBBS, it was not like that. Only it was during the completion of MBBS, when we were in the last days of our internship, we came to know that we'll have a big monster waiting for us outside, that we have to crack the post-graduation exam entrance. So only after internship, we came to know that this was just a bubble. MBBS was not something like MBBS में आ गए चलो हो गया, ऐसा नहीं है. So when we came out of medical college, out of MBBS, we came to know that actually getting into post graduation is very difficult thing. So then I took a diploma in anesthesia from Osmania. Then after completion of my diploma, I worked for 1 year in Khammam in a government hospital. Then I wrote the entrance again. I got into DMRD, that is radiology diploma, again into Shadan, 2 years. Then I've written a post diploma entrance for DNB. Then I got into KIMS Secunderabad, secondary DNB. And luckily, it was just yesterday I completed my exams. I'm waiting for the results. So this was my journey. That's great. We got to know some new insights that people usually don't know about MBBS or as a doctor. So
Thank you for both of your brief introduction. To move forward, we have compiled a couple of mostly asked questions or frequently asked questions that students may have in their mind when they choose to be a doctor and when they choose not to be a doctor. So let's shed some light on these questions and answers so that they get help in doing a right decision. So the first one is, you could say, what traits or characters or interest is expected from a doctor, or because, see, most often parents or students consider that if a boy or a girl has an interest in serving the community, or if for a childhood interests like to being a doctor or treating patients, such plays and other such concepts, then they think that this individual can be a doctor. So, what I mean to ask is this field for everyone and anyone, or is it only for people with certain traits and characters? Yeah. So, along with an intrinsic quality to serve people, one should have consistency and perseverance when getting into MBBS. I think it is a field for everyone, लेकिन you should have these three traits. And आपके पास interest है लेकिन perseverance नहीं है, आपके पास hard work नहीं है. I don't think that is a good combination. और आपके पास hard work है, perseverance है, लेकिन interest ही नहीं है. So even that is not going to work. Mm-hmm. Dr. Osama, would you be adding, or would this answer be sufficient for it? देखिए, ऐसा है इसमें, many people think that to get into MBBS we should have a certain amount of intellect, थोड़ा IQ ज़्यादा रहना, बच्चे मेहनती रहना, ये चीज़ें हैं अपनी जगह. I mean, बिल्कुल जो है जो below average students माने जाते हैं ना, I don't think this field is very relevant to them, because MBBS में ऐसा है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है. Compared to other fields, you need to work very hard. And it is not just MBBS. Post MBBS भी आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बहुत पढ़ना है. इनफैक्ट लाइफ लॉन्ग जो है आपको बहुत मेहनत, डेडिकेशन, परसिवरेंस, जैसा खिजर बताया ना, और फिर ये चीजें जो है आपको लाइफ लॉन्ग होना ही रहता. आपको अगर स्पेशली आपको जो है इंटरेस्ट नहीं है, अगर समझिए आप चाह रहे ही नहीं मेडिसिन करना, सिर्फ आप जो है किसी और के कहने पे आप मेडिसिन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो दैट वोंट वर्क. खिदमत खल्क का जज्बा भी जरूरी है. That's what you said, na? Actually, MBBS medicine is a combination of both things. It's also a very good way to make easy money, and it is also a very good way to serve the people. तो ये दोनों चीजें जो है आपको इसके अंदर मिल जाती जी. तो that way, certain amount of intellect. I mean, you did not be very genius. Like बहुत ज्यादा ज़हीन रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा certain amount of intellect तो जरूरी है जी. और मेहनत करने का जज्बा और आपके habits जो है बिल्कुल मेहनत करना ही नहीं चाह रहे हैं, लेजी हैं, वैसे लोगों के लिए शायद MBBS उतना सूट नहीं करेगा. अच्छा जी जी. या वो भी एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन था कि would lazy people could be doctors, so I hope that question is answered as well. Right. So this one is for the parents that are watching. Basically, a question to them that as both of you are doctors, and eventually you may have come across such students जिसके parents who forced them to get into MBBS. So how well have they done, and should the parents do this, and how have these students done in their careers, in their medical careers, and also into their personal lives? Actually, interest की बहुत ज़्यादा अहमियत है मेडिसिन में. अगर बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है, then it is better that you allow him to pursue his passion. अगर उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है, थोड़ी मेहनत कर रहा है, और अगर बायोलॉजी से उसका इंटरेस्ट इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता है, या अपने पेरेंट्स के साथ CME प्रोग्राम्स में या थोड़े फंक्शंस में जाने से उसको और इंस्पिरेशन मिलता है, या अगर पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल जाने के बाद
पेशेंट्स को देखने के बाद if he is able to develop more interest, then I think you should allow him a chance. अगर उन्हें उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन इन चीजों से अगर उसका इंटरेस्ट इम्प्रूव होता है, then you know थोड़ी मेहनत करने से hopefully he'll be able to do it. अगर क्वेश्चन इज बच्चे में खुद इंटरेस्ट है, तो then you don't have to worry about it. पेरेंट्स से ऑलरेडी वो इंस्पायर्ड है and he wants to be a doctor himself. Allow him to be a doctor. Great. That's a good answer. We would like to know your views as well. I mean, खिजर जैसा बताए जी. बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो नूरुल और कोई मसला ही नहीं है, बहुत अच्छी चीजें डाल दे सकते हैं. If he's not, yeah. Suppose अगर बच्चा averted नहीं, like he doesn't want to become a doctor, then it is waste of time and waste of money as well. So अगर इंटरेस्टेड है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन I think there's one caveat here कि भाई इंटर के स्टेज में बहुत सारे बच्चे डिसाइड कर नहीं सकते कि भाई मेरे को मेडिसिन लेना है या इंजीनियरिंग लेना है. Exactly. तो बहुत यंग एज है, इमेच्योर रहते हैं बच्चे. तो if he is not averted, then definitely we can put him into MBBS, not a big deal. But अगर पसंद नहीं है, उन्होंने कुछ और करना चाह रहे हैं, उन्होंने किसी चीज को लेके पैशनेट है, don't force into MBBS. I know few people who have been forced into MBBS and later they're regretting. Even now, post MBBS they've left practicing medicine. They're doing their passion things. So, right. Yeah, it reminds me of one of my friends. उनके मॉम HOD थे एक elite private college में here in Hyderabad. And this guy, after MBBS, he got into a central institute. वहाँ पे 1-2 साल करने के बाद he was not able to retain himself over there. उसको interest ही नहीं था बिल्कुल. And then he was getting into all sorts of nonsense and drugs etc. तो उनके मॉम उसको वहाँ से हैदराबाद ला लिए थे. एंड जहाँ पे वो HOD है वहाँ उस हॉस्पिटल कॉलेज में ट्रांसफर ले लिया गया था with great difficulties and unparalleled support from his mother at the college and the management. He finally cleared his MBBS, लेकिन MD नहीं कर पाए. And फिर मॉम का इन्फ्लुएंस था तो PhD कर लिए 1-2-3 साल पीछे लग के. लेकिन now he is not able to practice. He doesn't have his practice. His mom, his father, they are great doctors here in Hyderabad. And now he is into real estate. So, a valuable medical seat lost, unfortunately. Right. So there was this another follow-up question that was related to this. Is MBBS, you could say, a dead end? I mean, if you choose to be a doctor, can you shift your field and practice something else? As you've just mentioned, people did that, but how practical is it? And is it also practical on the vice versa, that people who are not doctors, for example, who are graduated in a different field, so if they want to do MBBS, is it practical for them to start all the way? So how practical are both of these situations, you could say? Yeah, again, it depends on the interest. So I have seen some people who did BSc nursing initially, BSc in BZD initially, and then they were working in a hospital under a doctor. They got profound interest into medicine, and they were inspired by the awe of the doctor, and they appeared for the medical exam, and then category 1 में seat ले लिए because after a long time अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो it might not be practical for you to get to a government college in a free seat. तो convener quota में ही private college में MBBS करें and then they are practicing. Then eventually they did their post graduation etc. Similarly, I can think of a friend who is quite senior to me. He joined MBBS in 1992 and उसके 1-2 साल में एक फैमिली के साथ इतना बड़ा सानेहा हो गया कि the entire family except him and his father and I think a sister, they died in the हज में एक हादसा हुआ था. आग लग गई थी मीना में. उसमें जी तो उसमें the family was lost
फादर बिकेम डिप्रेस्ड और साइकियाट्रिक मेडिकेशन पे आ गए थे. बच्चा बहुत छोटा था, एमबीबीएस कंप्लीट होने तक रुक नहीं सकता था. एंड दे हैड सम लैंड जिनको प्रोटेक्ट करना भी अब ये बच्चे की जिम्मेदारी हो गई थी. तो फॉर 20 लॉन्ग इयर्स ही वाज आउट ऑफ एमबीबीएस. एमबीबीएस की सीट छोड़ देके कुछ ग्रेजुएशन कर लिए, बीएससी वगैरह, एंड अपने जायदादों की हिफाजत किए. एंड एक बड़े अरसे के बाद उसमें उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए. एंड एक एमएनसी में रात में काम करते थे, दिन में जाके कुछ और काम करते थे. देन फाइनली he took re-admission into MBBS as 1 year senior to me. He was 20 years senior when he joined. Then again he got re-admitted as 1 year senior to me after 19 long years. And then he qualified MBBS in a distinction. That's So it is inspirational. Yes, very And inspiring. after MBBS, he took 2 or 3 years to get into post graduation. And PG भी मिला रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में DNB pediatrics मिला. And he got an excellent all India rank of 5,000 in the NEET PG exam. And उसके बाद he did his DNB pediatrics and is one of the greatest achievers in pediatrics, I would say, and practices in Hyderabad, and extremely dedicated. उनके बच्चे अब 1-2 साल में MBBS करने वाले हैं, hopefully. Truly inspiring. Yeah. This is truly inspiring, you could say. Yeah. Right. So another question that is commonly asked, or you could say thought from students, for someone who has opted for BPC, the science stream, basically in his intermediate. So it is considered that MBBS is his or her best option comparatively from the other options that they have, right? And he or she feels like a failure if they do not make it into MBBS while taking the BPC or the science stream. So here there are two questions that we would want you to likely address is, should he or she take some other fields? Most commonly people go out for BDS. Would that serve the same criteria or goal as an MBBS, or some other related fields? Should he or she take those and go in that line, or should he or she wait for as long as it takes and try to clear their entrance exams, or you could say long-term coaching? So this is one part of the question. Then we'll get to the next after it. Yeah. Sure. So the point is, if someone is genuinely interested, really and genuinely interested in medicine, then I think he should take a drop. And if he hasn't put in his best effort, then he should give his best effort and crack the entrance exam. There is no alternative to that. However, if someone is unable to secure a seat despite his best efforts already, then I think he should consider for other alternatives, like you said, dental surgery hai, nutrition hai, या pharmacy hai, clinical pharmacy.
Hello. Walaikum salam. Yes, apologies. There was some. We actually had upgraded it. We expected it to stay longer, but it had collapsed. We just wait for Dr. Khizr to join as well. Sure. Right. Yeah. Apologies to both of you. We actually had kept it for a longer time. I don't know why it lapsed. We had upgraded it. Yeah. So we were talking about. Can I talk? Yes, yes. Let's just check that our audience can hear us. Let me just get a confirmation with that. Right. Yes, we can continue. So, if someone is really interested in medicine and has not given his best effort yet, then I think he should take a drop, spend another year, and crack the entrance exam. However, despite best efforts, if you're not unable to crack the seat, then I think you should take a drop. I mean, you shouldn't take a drop and choose the other options that are in front of you, like the dental surgery hai, pharmacy hai, nutrition hai, etc. The point here is, अगर आप BDS कर लेते हैं जी. और आपको अगर genuine interest था medicine में, तो BDS cannot give you that satisfaction which MBBS could have provided. And the second thing is, that is BDS is a relatively saturated field. BDS is a relatively saturated field. If you are an average dentist, then आपको बहुत ज़्यादा competition का सामना करना है. If you are extraordinary, unparalleled, then people are going to pick you up, from that cream. There's no problem with that. Average dentists को we see working in private clinics, private dental hospitals for no remuneration at all when they start their career. 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, कोई पैसे नहीं. And then salary अगर उसके बाद मिलती है तो 10,000, 12,000, 15,000. अरे, other people are earning more than you guys. ठीक है. Then second, BDS के बाद अगर आप MDS करना है, there is a big disproportion between the number of people passing out of BDS and the number of seats for entry into MDS. तो ये जो disproportion है, इसकी वजह से many people end up staying BDS for a very long time. अगर बाद में हाथ हुआ करते, नहीं हुआ तो नहीं कर सकते. प्राइवेट में सीट्स भी कम है, गवर्नमेंट में तो पूछो ही मत. 200-300 सीट्स होंगे मैं समझता हूँ तेलंगाना में पूरे. देन उसके बाद में this is also because one thing that I have personally felt is the quality of dental doctor coming out has reduced significantly. They are unable to independently handle the patients in an OPD. तो सीखने के लिए उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बावजूद, उनकी फाइनल डिग्री एंड रजिस्ट्रेशन आने के बावजूद, they have to work in private clinics under established doctors for free to learn those skills of communication, skills of the clinical and surgical skills. ये जो कॉमन प्रोसीजर्स हैं लोग के, RCTs है, डेंटल एक्सट्रैक्शंस हैं, एनेस्थीसिया है, all of that, स्केलिंग है, क्लीनिंग है, ये कॉमन प्रोसीजर्स, ये हमारे बच्चों को
एक उबूर के साथ नहीं आते, एक कॉन्फिडेंस के साथ ये प्रोसीजर्स उनको करने नहीं आता, इसमें वो लोग महारत नहीं, डेंटिस्ट्री एक्सपेक्टेड जॉब्स, नंबर वन। देन अगर आप BDS कंप्लीट करने के बाद दूसरे जगहों का रुख करते हैं, जैसे US है या कनाडा है, देन आई एम श्योर वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत बेटर हैं। लेकिन क्रैकिंग द लाइसेंस एग्जाम इन द US after BDS is even more difficult, and that is why after BDS I see many people, they switching their fields and working as medical transcriptionists, for US companies. Then similarly, they do this hospital management, take 2 साल का course, and then become hospital administrators, managers, MODs, managers on duty in private and corporate hospitals, etc. So that is the fate. So ultimately, अगर आप this is true for any other field, अगर आप excellent हैं अपनी field में, then people cannot find a substitute to you. You will get placed where you want, at what terms and conditions you want. लेकिन अगर आप एक average dentist हैं, तो you are going to have a lot of difficulty in getting yourself placed in good places. And yes, entrepreneurship एक another option है BDS करने के बाद. आप अपनी clinic खोलिए, अपने skills को enhance करिए, अपने साथ काबिल लोगों को जोड़िए, and एक comprehensive dental treatment लोगों को provide करिए. I think that can go a long way. Then if you come to pharmacy, then pharmacy is one and clinical pharmacy is another. So B pharmacy, bachelor in pharmacy. D pharmacy का तो I think almost it has vanished. Then you're left with B pharmacy and Pharm D. Pharm D is एक baccalaureate है, एक PhD के equivalent या एक doctorate के equivalent pharmacy की degree है. I think complete 6 years का course है वो, जिसमें आपकी 1-8 साल की internship भी होती है, उसमें एक 6 महीने की का थीसिस प्रोजेक्ट भी होता है आपका, जिसमें आप एक क्लिनिकल रिसर्च करके अपने फाइंडिंग्स पब्लिश कराते हैं. तो फार्मडी एक अच्छा इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है. दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन फार्माकोविजिलेंस, with adverse effects being reported, signals being detected, even from drugs that have been in use for more than 5-6 decades. So generally, when a drug is launched into the market, then it is given a new drug label for 4 years. And 4 years तक उसमें बहुत ज्यादा कड़ी नजर रखी जाती है कि कहीं इसमें ऐसे साइड इफेक्ट्स तो नहीं हैं जो हम मिस कर दिए हैं ड्यूरिंग आवर ट्रायल्स. लेकिन उसके बाद में भी 4 years होने के बाद भी we are seeing delayed side effects, chronic side effects, and adverse events. They could be minimal, 1 in 1 lakh maybe, लेकिन they are being noticed. So pharmacovigilance, where you are vigilant about the drug, ये एक concept है जो pharmaceutical companies में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, and therefore industrial pharmacy में B pharmacy and Pharm D people can get accommodated. Similarly, antibiotic stewardship is one more thing in post pharmacy, where there is resistance to antibiotics because of irrational use of antibiotics. आपको देना होता है 7 days का एंटीबायोटिक कोर्स, दिन में 2-3 दफा आप देते हैं, once a day. पेशेंट नॉन कॉम्प्लायंट है, आपने दिया 2 दिन लेकिन वो ले रहे हैं 1 दिन, या आपने 1 हफ्ते के लिए दवाई दी थी लेकिन वो बंदा सिर्फ 3 दिन लिया क्योंकि उसका थ्रोट पेन कम हो गया, एंड ही स्टॉप द एंटीबायोटिक, एंड दिस लीड्स टू रेसिस्टेंस कि द सेम ड्रग इज इफेक्टिव द नेक्स्ट टाइम द सेम पर्सन इज इन्फेक्टेड. तो उसके लिए एंटीबायोटिक स्टीवॉर्ड्स फार्मेसी graduates are posted, Pharm D people are posted in corporate hospitals, and they expect a reason from the clinician कि आप ये एंटीबायोटिक इसको क्यों स्टार्ट किए. अनरीजनेबली वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, 3,000 रुपए वाली एंटीबायोटिक दिन में 3 दफा अगर आप दे रहे हैं, तो आपको एक लेटर साइन करना होता है कि भाई मैं जस्टिफाई करना होता है द रीजन फॉर यूजिंग दैट एंटीबायोटिक. तो दैट इज वन वेरी गुड कॉन्सेप्ट. एंड Pharm D के बाद रिटेल फार्मेसीज है, हॉस्पिटल फार्मेसीज है, वहां पे भी आप जॉब कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट इन क्लिनिकल रिसर्च.
Right. So this is one option. Right. So, yeah, there was a very comprehensive and good outlook on all the different fields as well. So, to also shed some light and discuss on this aspect, that as you told, if someone is interested कि मुझे MBBS ही करना है, so he should do it. But if at the end BDS is in itself its own field, but does not necessarily serve the same goal or the same idea as an MBBS. If I'm not wrong, this is what you had said. Yes, yes. So also some discussion on how important these fields in itself as well are, because for example either it be a BDS or you could say a PharmD, or these fields, they're usually looked down upon from people who have it's either like आप लोग MBBS crack नहीं करे इसलिए वहाँ चले गए, या फिर it's either like you guys they feel that they could not afford doing an MBBS. So how in itself are they important and equally impactful in the society, these fields? इसमें देखिए पहली चीज, अगर आप ब्रांचेस देख रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं पोस्ट एमबीबी पोस्ट इंटरमीडिएट बाईपीसी के स्टूडेंट्स के लिए, तो सबसे पहले जो चीज कंसिडर करते हैं हम लोग वो है रिस्क. तो रिस्क जो है अल्लाह ताला बखदर मुकद्दर रखा. ऐसा नहीं है कि मेडिसिन करें तो रिस्क ज्यादा है, डेंटल कर रहे हैं तो रिस्क कम है. रिस्क बखदर मुकद्दर है पहली चीज. इसमें इंपॉर्टेंट अहम चीज क्या है बोले तो, आई डोंट वांट टू साउंड एरोगेंट, लेकिन मेडिसिन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. जैसा फिजर बताया ना, डेंटल में है, कोई वेटरनरी में है, या फिर एजीबीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, या फिर फार्मेसी, डी फार्म, एम फार्म, ये स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो मेडिसिन के इक्विवेलेंट तो नहीं हो सकते. एंड दैट इज ट्रू कि भाई दोस फील्ड्स आर लुक्ड अपॉन लाइक उतनी रेस्पेक्ट जितनी आप डॉक्टर को देते उतनी रेस्पेक्ट दूसरे फील्ड्स के लोगों को नहीं देते. लेकिन ऑप्शंस हैं. अब देखिए एक बंदा है, डिस्पाइट गिविंग हिज बेस्ट एफर्ट्स, सब चीज करने के बावजूद भी मेडिसिन क्रैक नहीं कर सक रहे हैं, तो देन ही हैज टू गो फॉर सम अदर थिंग. मेडिसिन के पीछे कितने साल करेंगे भाई? एक साल पढ़ते लॉन्ग टर्म लेते, दूसरी साल पढ़ते लॉन्ग टर्म लेते, तीसरे साल लॉन्ग टर्म लेते, 4-5 साल तो वेस्ट नहीं कर सकते ना आप. सही. तो अगर आप क्रैक नहीं कर सक रहे हैं, एंड एफोर्डेबल भी नहीं है, एफोर्डेबिलिटी का भी मसला है. बाज बच्चे जो है समझिए एवरेज रहते, क्रैक नहीं कर सकते, लेकिन उनके पेरेंट्स एफोर्ड कर लेते जी. बी कैटेगरी की सीट में मैनेजमेंट कोटा में उनको दिला देते, दे डू वेल. और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग मैनेजमेंट में ले रहे हैं वो लोग अच्छा नहीं करते, सिर्फ मेरिट के स्टूडेंट्स अच्छा करते. एमबीबीएस में हमारे क्लास के दोनों टॉपर्स जो है दे वर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स एंड दे डू रियली वेल. ऐसा भी नहीं है कि मैनेजमेंट में जो सीट लिए वो नहीं करते कुछ भी ऐसा, बल्कि प्राइवेट कॉलेज में, बिलो एवरेज कॉलेज में पढ़ के भी बच्चे जो है अच्छा कर रहे हैं. तो रहा सवाल दूसरे सब्जेक्ट्स का, नर्सिंग है, ऑप्शंस हैं, लेकिन पे वाइज जो है जितनी एमबीबीएस को पे करते लोग, एमबीबीएस इन द सेंस एमबीबीएस के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो जितना एक्सपीरियंस दरकार है वो लेने के बाद जो फुल फ्लेज्ड डॉक्टर जब प्रैक्टिस में आ जाते हैं ना हम, जी. उस वक्त जो पे मिलती ना, शायद वो पे दूसरे ब्रांचेस में नहीं है. जॉब सिक्योरिटी है. सपोज इफ यू गेट इनटू एग्रीकल्चरल बीएससी एंड इफ यू गेट इनटू वेटरनरी, यू आर गारंटीड अ गवर्नमेंट जॉब, रेस्पेक्टेबल. आई मीन आपको जो है गेजेटेड ऑफिसर के पोस्ट पे मोर देन 70-80,000 की जॉब आपको डेफिनेटली मिल जाती. आई मीन वेटरनरी में और एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ मैं. रहा सवाल दूसरे ब्रांचेस का, तो डेंटल इज रियली अ सैचुरेटेड फील्ड. बहुत कम जो है अपॉर्चुनिटीज है डेंटल में, अनलेस यू डू अ पोस्ट ग्रेजुएशन इन डेंटल, व्हिच इज वेरी लेस लाइकली बिकॉज ऑफ वेरी लेस सीट्स. अदर थिंग्स आर देयर. राइट. Right. Thank you for that discussion as well. So moving forward, as we have talked about finances and affordability, there are some questions that come around in it. So one of them being, some come into this field merely on the basis that doctors are very financially stable. Yeah, doctors बहुत पैसा कमाते. So how true is this claim? And if it is true, do all doctors reach this certain level? And can one come into this field just on the mere basis of money motivation? कि मैं बस is that enough to make him pass through the entire process of MBBS? If your only motivation is to earn money, then MBBS is not a good choice, because the latency of onset of inflow of money in MBBS is very long. आपको 6 साल MBBS करना है,
1-2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट लेने में लगाने हैं, 3 साल एमडी करना है, 1 साल सीनियर रेसिडेंसी करना है, फिर एक साल गैप लेके 3 साल का डीएम करना है या रजिस्ट्रार के जॉब आपको करना है, देन आपको एक एसोसिएट कंसल्टेंट का पोस्ट मिलता। तो ये 14-15 साल में आपका दोस्त जो बीटेक करा, एमई कर लिया, आप एमबीबीएस करने से पहले उन्हें यूएस में रहता, राइट? एंड वहां पे अब 1-2 साल उन्हें बीटेक अपने 4 वालों के भी सेमेस्टर अभी कंप्लीट करने के बाद कुछ ज्यादा एमएस के बाद भी सैचुरेटेड है समझो। समथिंग, मतलब मैं देखा हूँ जी जी या कि हम लोग ऐसे यू नो हम लोग अभी ऐसे हाल पे नहीं पहुंचे थे। हमको स्टाइपेंड मिलना मुश्किल था, लेकिन दोस्त घरा खरीद रहे थे। हम लोग अपनी मोटरसाइकिल पे जाते थे, अपनी छोटी डैटसन कार में जाते थे, वो लोग कैमरी खरीद चुके थे। ओके तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इवेंचुअली आफ्टर टॉयलिंग फॉर मे बी 10-14 years 15 years, उसके बाद जब आपको पैसे आते तो आई थिंक इट इज टू मच। आप बस अल्लाह का करम रहता आपके ऊपर, आप बोलते भाई इतने का कुछ दे रहे हैं लामिया, बस से बोलते आप। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि अगर पैसे ही आपका मोटिवेशन है, तो जो क्रूएल नाइट ड्यूटीज हैं आपके, और जो टॉयलिंग फेज है एमबीबीएस का, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स, इंटर्नशिप, रेसिडेंसी के 3 साल, और वो पीजी क्रैक करने का 1-1.5 साल 2 साल का स्ट्रेस, यू कैन नॉट बेयर विथ इट जस्ट विथ अ मोटिवेशन कि मैं अगर ये पास कर लिया तो मेरे को महीने को 10 लाख रुपए आने वाले। दैट इज नॉट गोइंग टू कीप यू मोटिवेटेड। तो आई वुड से कि अगर आपका पैसा ही मोटिवेशन है, तो आप इससे कम एफर्ट में दूसरी फील्ड में इससे पहले पैसे कमा लेते। Can I talk? I beg to differ. देखिए मेडिसिन में तकरीबन खैर खिजर का अलग केस है, और वो जो है माशाल्लाह हम देखे बहुत जज्बे के साथ काम करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम्स वाज कैटरिंग ए होल बंच ऑफ पॉपुलेशन इन ओल्ड सिटी। तो उन्होंने खिदमत खल्क के जज्बे के साथ कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन जनरल जब आप देख रहे हैं ना, मेडिसिन में जितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम मोर देन 90% ऐसे ज्वाइन बिकॉज दिस इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन मेडिसिन। अब रहा सवाल लेटेंसी है, यकीनन है। एक एमबीबीएस आपका एक सवाल भी है उसमें कि भाई एमबीबीएस पोस्ट एमबीबीएस जो है कब सेटल होते हैं हम लाइफ में, पैसे कब आना स्टार्ट होते हैं। तो एटलीस्ट जो है 10 से 12 साल कैसा भी लग जाते हैं आपकी। लेकिन पोस्ट एमबीबीएस भी ऐसा नहीं है कि भाई आप यूर पेड लाइक 10-15,000 डेंटल के बच्चों को जैसा 10-15,000 पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट 40-50,000 की नौकरी तो आपको पोस्ट एमबीबीएस कहीं भी मिल जाती है इंशाल्लाह। तो यू गेट टू अर्न रीजनेबली गुड पोस्ट एमबीबीएस। अब रहा सवाल जैसा 4-5 लाख महाना कमाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जैसा फिजर बताए 12 साल तो लग जाते, एंड दैट टू डिपेंड्स। अब हमारे पास खम्मा में हम देख रहे हैं कि भाई डॉक्टर्स हैं, इतना पैसा है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना समझ में नहीं आ रहा उनको। 15 लाख कमाने वाले डॉक्टर्स है भाई महाना। आप यूएस में नहीं कमा रहे होता जितना इंडिया में कमा रहे हैं। और एक मेडिसिन करने का एक एडवांटेज है ये कि भाई आप अपने मकाम पे जहाँ पे आप हैं, अपने वतन में रह के अच्छा कमा सकते हो। आपको यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं रहती। आप आप एमडी कर लिए, आप हैदराबाद में हैं, तो हैदराबाद में अपना खुद का हॉस्पिटल, खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं। तो दैट थिंग इज देयर। डेफिनेटली पैसा बहुत है मेडिसिन में, ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, थोड़ा टाइम पीरियड ज्यादा है, 30 years अराउंड। अब रहा सवाल दूसरे फील्ड्स में लोग कमा रहे हैं, मतलब तो दे आर वेरी फ्यू पीपल। अब रियल एस्टेट में है कोई इंजीनियरिंग करके, इंजीनियरिंग का तो आप तो मालूम है आपको, गली में जो एक पत्थर लेके मारे तो इंजीनियर को जाके लग रहा नहीं सही बात है, ज्यादा हो गए unfortunately and sadly, but it is true, खैर उसमें भी डेफिनेटली वर्थफुल जो है उनको तो हर जगह डिमांड है, लेकिन बहुत ज्यादा है मार्केट में। दैट्स व्हाट आई से। रिलेटिवली अभी उतना सैचुरेट नहीं हुई, और मेडिसिन में भी बास फील्ड्स हैं सैचुरेटेड, लेकिन ओवरऑल जो है डॉक्टर्स के लिए स्कोप यकीनन है। Sure. Okay, so we have a couple more questions left. We have, I guess, 10-15 minutes more. For the viewers who are watching, you guys can start asking questions in the comment section on the YouTube live. So we'll look at them and answer as if time permits us.
Okay, so to continue, we have just a couple of more questions, which we'll briefly discuss. Uh, this is for this question is for, you could say, from the girl students who are watching and would want to be into MBBS. So I don't know, as men, if we could answer that aptly, but how does MBBS and marriage go hand in hand? I mean, just a brief, you could say, uh, a discussion on that. इसमें अगर देखिए किधर आंसर कर रहे हैं, करिए करिए। सॉरी, शायद मैं थोड़ा सीनियर हूँ आप इसलिए ज्यादा ज्यादा बोल lengthy कर सकता सकते हो हूँ। सही बोले। थिंग इज जी, मैं एक दो इनसाइट्स दे देता हूँ, फिर आप बिस्मिल्लाह हाँ बिल्कुल elaborate बिल्कुल, करिए बोलो उसको। बोलो। थिंग इज मैरिज के बाद अगर आपकी स्पाउस रेसिडेंसी कर रहे हैं, रेसिडेंसी में है, शादी हो गई है आपकी, एंड इफ दैट रेसिडेंसी हैपेंस टू बी फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल which is a center of excellence for a particular department in the state, and receives patients from adjacent states also, then it is going to be challenging. मैं बात कर रहा हूँ pediatrics की, from Nilofer Hospital, that is under Usmania Medical College and caters to thousands of patients every day. गांधी मेडिकल कॉलेज भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ पे हैदराबाद में, लेकिन उसका 8 फ्लोर की बिल्डिंग में सिर्फ एक फ्लोर पीडियाट्रिक्स का है. एंड इन उस्मानिया अंडर नीलोफर हॉस्पिटल देयर आर 4 ब्लॉक्स फॉर पीडियाट्रिक्स अलोन. तो इमेजिन आपको जो नाइट ड्यूटीज रहेंगे वो ऑलमोस्ट 10 नाइट ड्यूटीज एवरी मंथ. एंड नाइट ड्यूटी इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मतलब है कि आप सुबह में 8 बजे जा रहे हैं, एंड स्पेशली इन फर्स्ट ईयर ऑफ योर रेसिडेंसी अगले दिन दोपहर में 2 बजे निकलते हैं आप वहां से. Isn't it? तो एंड वो जो 30 घंटे 32 घंटे आप ड्यूटी कर रहे हैं उसमें यू विल नॉट गेट टू रेस्ट. एक आध घंटा रात में 2-3 बजे अगर पेशेंट्स नहीं रहे, आप टेबल पे सर रख के लेट गए तो आप लकी है. तो एंड देन ये करके आने के बाद अपने घर के काम संभालना और बच्चों को देखना, एंड अगर उसके बाद भी फिर आपको 1-2 घंटे क्लिनिक को भी जाना है, then it's a nightmare. So it's going to be very very difficult. लेकिन अगर आप कोई cool subject में हैं, especially clinical non-clinical department में हैं, या clinical में भी cool department में हैं, जैसे ophthalmology में है, 40 दिन में एक night duty आती है आपको, और dermatology में है hardly any night duties, और दिन भर भी उतना hectic नहीं रहता. तो I think you will be able to do some justice to the family. एंड ये एग्जॉशन का, वर्क प्लेस पे एग्जॉशन का इफेक्ट ये होता कि साइकोलॉजिकली यू आर अफेक्टेड. एंजाइटी रहती है आपको ग्रीफ रहती है, सैड रहते हैं आप, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट फैमिली सपोर्ट, आपके स्पाउस भी अगर ऐसे ही completely busy है, it's going to be difficult. Right. So sorry to interrupt, but there's a question that was again framed in related to what you almost had answered. It's about how what is the, you could say, the mental peace of a doctor, how the mental state, you could say, how it is, because sometimes doctors are very stressed, and sometimes you may get overwhelmed by the feeling of helping out someone. So does this balance out, or is मतलब आप लोगों को ये stress की आदत हो गई, या फिर is life always very hectic for you? So how is it for a doctor? इसमें देखिए, पहली चीज, खिजर पहले आप बहुत मजलूम मालूम हो रहे थे मेरे को आंसर जब कर रहे थे. नहीं, असल में देखिए, मैं मैरिज के क्वेश्चन पे एक बात ये बताना चाह रहा हूँ. बहुत सारे पेरेंट्स जो है बच्चों को एमबीबीएस में सिर्फ इसलिए दाखिला कराते हैं उनका कि बच्ची की शादी हो जाती. हमारे क्लास में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे. तो एक तो है फैक्ट, सही बात है, अच्छी जगह कहीं शादी हो जाती है बोल के दिला दे रहे हैं, लेकिन देयर इज वन सेइंग व्हिच गोस लाइक, if you are into PG then you should not marry, and if you marry you should not carry. तो ऐसा है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन जब कर रहे हैं ना, उस वक्त आपकी शादी नहीं हुई तो बेटर है, और अगर शादी हो गई तो कम से कम प्रेगनेंसी प्लान नहीं करे तो बेटर है.
लेकिन ऐसा है कि ये चीजें हैं अपनी जगह. डेफिनेटली रेसिडेंसी पीरियड बहुत हेक्टिक है एंड इट डिमांड्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट. आप जैसा बताया ना, बहुत बर्नआउट रहता. आई मीन अब मैं जो किम्स में जहाँ काम कर रहा हूँ मैं, इफ आई गो 8 o'clock इन द मॉर्निंग टुडे एंड इफ आई हैव अ नाइट ड्यूटी टुडे, आई कम बैक टुमारो इवनिंग एट 5 o'clock. एंड रात हार्डली मेरे को 3 से 4 घंटे का वक्त मिलता सोने के लिए. दैट इज ऑल्सो इंटरप्टेड. कैजुअलिटी से कॉल आते रहते, दूसरे डिपार्टमेंट से कॉल आते रहते. तो मेहनत, अगर आप मेहनत नहीं करना चाह रहे, आप बिल्कुल स्ट्रेस लेना ही नहीं चाह रहे, तो भाई मेडिसिन नको करिए. बिकॉज आपको इसके अंदर जो है नाइट ड्यूटीज यकीनन रहेंगे, मेहनत भी लगेंगी. है बात सब्जेक्ट्स, बात फील्ड्स है, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है, जिसमें आपको रिलेटिवली जो है कम मेहनत है, कम काम है. लेकिन इन जनरल जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है उसके अंदर यकीनन आपको जो है बहुत ग्रिलिंग टाइम रहेगा. एंड एमबीबीएस में ही नहीं, उम्र तमाम जो है, यू शुड बी ऑन योर टोस. आप अगर समझिए आपको कोई केस नहीं भी करना है, रात में आपको 3 बजे कॉल आया, सिजेरियन सेक्शन है भाई, एनेस्थीसिया देना है, आप कम से कम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तो भी आपको जाके करना ही करना है. पैसे कितने आते हैं सेकेंडरी है, यू कैन नॉट डिनाई. आप कोई पेशेंट जो है मर रहा, आप उसको एड्रेस नहीं करते बोले तो वो तो एकदम जो है सही बात नहीं है ना. जी जी. तो आपको हमेशा टोस पे रहना है, उम्र तमाम ये चीज है. ये स्ट्रेस जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस के पीरियड में या पीजी के पीरियड में है. लाइफ लॉन्ग जो है हमेशा आपको इस चीज के वास्ते तैयार रहना है कि भाई कभी भी कैसा भी पेशेंट आओ, उनको हम जो है उनको एड्रेस करेंगे, उनको ट्रीट करेंगे. तो मेहनत है, नींद की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी. अब जैसा फैमिली टाइम दूसरे प्रोफेशंस में आप देखते कि भाई पार्टीज भी हो रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं वेकेशन पे, मेडिसिन में बहुत मुश्किल है. आप जी यकीन करिए 7 साल हो गए शादी को मेरे, अब तक मैं हनीमून नहीं जा सका. तो ऐसा है, बहुत मुश्किल है, टाइम निकालना बहुत मुश्किल है. जी जी. Right. आप भी मजलूम मालूम हो रहे हैं. So there are a couple more questions left which are a little important. Let's wrap it up with a brief answer. Um, Usually there is this important question that we had to address earlier as well, is when is the right time for a student to you could say start preparing for MBBS. So parents usually क्या करते हैं, बच्चों को some go on another extreme and tell them to start right from the 6th standard 7th standard. भाई आपको डॉक्टर बनना है तो अब से पढ़ो, आप अब से मेहनत की आदत डाल लो. या फिर some of the students start very late. So what is the right time that they should start and plan if they want to be a doctor? I think it's from first, intermediate first year of intermediate से अगर आप 10th के बाद सिंसियरली 1-2 साल दे देते हैं तो आपके लिए आसानी रहेंगी और easily you'll be able to crack MBBS. Especially with institutes like शाहीन है, MS है, श्री चैतन्य है, नारायणा है. ये institutes holistic approach लेकर बच्चों को सारे subjects में they aim for excellence in all the subjects for for every individual. So I think that should be enough. आप 7th class से 6th class से IIT के लिए some special classes ले रहे हैं, आप मैथ्स को special tuitions ले रहे हैं वगैरह, उसकी जरूरत नहीं है. And अगर आप sincerely अपने curriculum को follow कर रहे हैं तो you don't even need those edtech platforms like Byju's है या so many Unacademy हैं that are coming up online. अपने प्रोफेसर को, अपने लेक्चरर को आप बस सिंसियरिटी के साथ फॉलो करिए और वो स्टडी आवर्स का सही इस्तेमाल करिए. मॉर्निंग में क्लासेस, इवनिंग में स्टडी आवर्स. I think that should be enough. Right. So we have just 2 more questions left before we wrap up. So right. So if we talk about financially, just a very quick or a short answer on how much would it approximately cost for a student if he plans to be a successful doctor, right from jaisa aap log bole, from his MBBS to his MD and other certifications and studies, how much would it approximately cost him, like a rough timeline with a short so yeah. So you're talking in terms of finances or? Yeah, the cost. I mean, how much will it cost in India doing it in India? Yes, cost of this in India. If you are able to crack a government seat, then it's annually 12,000 per year. I mean, it's 12,000 per year for 6 years. 12 6 for 5 years.
qualifier is up 60,000, your entire MBBS course is over. And then MD ka, I think it's around 18 or 20,000 per year for 3 years. And internship अगर आप government से कर रहे हैं, तो you get a stipend of 21,000 per month into 12 months. And अगर आप PG government college से कर रहे हैं, then you get a stipend of 60,000 per month for 36 months. So if you're talking about, if you're able to crack a seat in government college, then effortlessly or pricelessly आपको yes MD हो जाएगा. If you're talking about private, then Osama bhai can throw a light on that. हाँ, प्राइवेट जैसा खिजर बताया ना, गवर्नमेंट में क्रैक कर लिए तो बहुत आसानी से हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल मिनिमल फीस रहती, लाइक आप आज इजीली एवरीबॉडी कैन अफोर्ड दैट. तो गेटिंग इनटू गवर्नमेंट कॉलेज इज लाइक अ बोन. लेकिन मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कांट गेट इनटू इट. इवन प्राइवेट कॉलेज में जब हम जा रहे हैं तो ए कैटेगरी की सीट अगर है तो समझिए ईयरली फीस तकरीबन अराउंड 1 लाख है. और उसमें फिर मैनेजमेंट कैटेगरी में 2 टाइप्स के सीट्स हैं, एक मैनेजमेंट कोटा 1, मैनेजमेंट कोटा 2. मैनेजमेंट कोटा 1 की फीस अप्रोक्सीमेटली अराउंड इट कॉस्ट 15 lakhs per annum. 15 lakhs per annum for 5 years. एंड देन कैटेगरी बी की सीट 1.5 करोड़, कम से कम 1 करोड़ से 1.5 करोड़, डिपेंड्स, जाके मैनेजमेंट से बात करने का रहता है. बास कॉलेजेस में थोड़ी कम, लेकिन 1 करोड़ के ऊपर तो चल रही. बेस प्राइस फॉर गेटिंग इनटू एमबीबीएस in management quota from a medical college is around 1 crore. So 1 crore for 5 years, right, that is there. And post graduation की सीट अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो मिनिमम 1 crore 20 लाख से लेके आपको 2.53 crore तक है. डिपेंड सब्जेक्ट कौन सा ले रहे हैं आप. अगर रेडियोलॉजी ले रहे हैं, डर्मेटोलॉजी ले रहे हैं तो कॉस्टली है. रिलेटिवली एनेस्थीसिया, सर्जरी, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में थोड़ा कम प्राइस पे ले जाते. तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज for MBBS 1 crore, for PG 2 crores. right. Okay, so thank you very much for that answer as well. So we will now end it with just this last question. Just you could say a short answer would suffice. In what is the best feeling about being a doctor? A couple of sentences from Dr. Osama and a couple of sentences from Dr. Khizr, and we will conclude today's session. So what's the best feeling in being a doctor? Best feeling is like you get the power to treat patients. कोई मजबूरी में आपके पास आ रहे हैं तो उनको जो है कुछ मदद करने की जो फीलिंग है ना. आप पेशेंट हमारे पास कुछ सोच के आता, भाई मैं तकलीफ में हूँ, मेरी तकलीफ को आप दूर करिए. जब हम उनको ट्रीट करते और उनकी तकलीफ को दूर करते तो वो बहुत सेटिस्फाइंग रहता, बहुत जो है उसमें सुकून मिलता. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेस्पेक्ट. आपको जो है इतनी रेस्पेक्ट है मेडिसिन में माशाल्लाह से. आप चले जाइए कहीं भी, हर कोई डॉक्टर साहब बोल के बोलते, बहुत रेस्पेक्ट. फील्ड ऐसी है बेसिकली, जो है हमारी फील्ड ऐसी है कि भाई बहुत नोबल प्रोफेशन है. आप लोगों को जो है, मैं बहुत सारे उलमा से मिला, दे ट्रीट डॉक्टर्स ऑन पार विद आलिम. तो इल्म की जो 2 किस्में बताई गई, उसमें एक इल्म तिब्बी है और फिर जो दीनी इल्म हमको सिखाए जाते हैं वो है. तो 2 भी इक्वल है. दैट वे आपको जो है बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती सोसाइटी में. एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है, right, बाकी के बहुत सारे एडवांटेजेस है. जी डॉक्टर खिजर, अगर आप एक कुछ लाइन. साहब थोड़े छोटे छोटे इंस्टेंसेस रहते हैं. जैसे एक पेशेंट आया जिसकी शुगर कंप्लीटली ड्रॉप हो गई, 17-15 mg पर डेसिलीटर है, पेशेंट इज अनकॉन्शियस. आप उसको देखें, जीआरबीएस चेक करें, आपको मालूम हो गया इसकी शुगर लो हुई. आप 100 ml का एनएस उसको आधी रात को चढ़ा दिए, 10 सेकंड में उन्हें उठ के बैठ गया. तो वो जो अटेंडेंट्स की खुशी रहती, that brings a smile on your face as well, and that is very satisfying. Similarly, जैसा ओसामा भाई रिस्पेक्ट की बात करें, तो you get respect even from the so-called elite people of the society. Politicians भी आपकी रिस्पेक्ट करते, इस वाले भी आपकी रिस्पेक्ट करते. It is not just the common people. तो I think वो भी एक बहुत बड़ी बात है. Alhamdulillah. Alhamdulillah, that's great. So I hope, thank you very much for both of your time. Both of you had
taken out time for and discussed this topic with us. I hope the viewers also got a good and holistic approach on how MBBS is and how the field is. So again, I would like to thank from behalf of the entire ThinkViser team, Dr. Khizr and Dr. Isam, and also the viewers who are joining in and watching this. We hope to have more such sessions and more such interactive and courses and trainings upcoming. So you can always, for the viewers watching, you can always follow us on Instagram, on Facebook. We have our website www.thinkwisersessions.com, so you can get updates there. We also have a WhatsApp group, so you guys can join as well. I believe you had got an email with the registration link. So all in all, thank you very much. It was a good session. Thank you, and let's conclude the session now. Thank you very much. Thank you. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Thank you so much. Jazakallah.